Is everything good to go? Can I start? Yes, you can. Okay. Just wait for So- more participants. All But right. otherwise, you can start speaking. Yes. Sorry. Okay. So hi everyone. I'm Disha Agrawal. I am a third year MBBS student at Maulana Azad Medical College, New Delhi. I appeared for NEET in the year 2020 and I had an All India rank of 499. So आज I picked a topic that is something I consider very important NEET preparation में, which is tackling weak topics for NEET. तो मैंने 11th and 12th में preparation की थी NEET की, and there were so many topics which I found were weak. मतलब I had a very hard time understanding कि इसमें क्या चल रहा है. So I had to put in a lot of effort. And uske through, I got a lot of experience on how to handle weak topics, why you should do it, how you can do it. And I'm here to share my experiences with you. So stay till the end, and I hope you will learn something and you will be able to apply it to your preparation. So I will say something. There ain't no mountain high enough. And if you work hard enough, you can conquer all your weak and tough topics. Right. So the biggest mistake that I feel NEET aspirants make very frequently कि हम उन टॉपिक्स को बहुत ज्यादा टाइम देते हैं जिनके साथ वी आर ऑलरेडी कंफर्टेबल एंड बिकॉज हमें कंफर्ट वाली फीलिंग आती है बिल्कुल हमारे कंफर्ट जोन में ये क्वेश्चंस हैं ये हमें सॉल्व करना आ रहा है एंड वी कीप सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस बट वी इग्नोर द टॉपिक्स दैट वी हैव टू फिक्स बिकॉज अगर हमें वो टॉपिक्स फिक्स करने पड़े इट मीन्स कि हमें अपना एफर्ट डालना पड़ेगा एंड हमें रास्ते में काफी फेलियर्स भी मिलेंगे विच कैन बी वेरी डीमोटिवेटिंग आई अंडरस्टैंड बट दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक. So this cartoon here, I found it very funny. So this person says, I am procrastinating on one thing by working on something else. That is something I did all the time कि मुझे काम नहीं करना तो चलो कोई बात नहीं कोई और काम अभी उठा लेते हैं and we will fix this topic later. So I have done it too, guilty as charged, but I will share my experiences so that you don't have to. Right. So it's a valid question कि why should I work on my weak topics, right? Because हम अब जो topics हमें comfortable है हम उनसे अपने marks लेंगे. So there is something that I call the input-output ratio. So what is it? What are the inputs that you will give in? Your time, very precious time, and it's very valuable, very precious. You don't have enough of it. Your effort, like the time you spend, the effort that you put in, you skip out on a lot of your events, your outings, and you decide to stay at home and you decide to stay at your coaching and you decide to study. So that is a lot of effort. And then resources, of course, books, test series, money. So these are your inputs. And what is the singular output? जो हमें NEET में देखना होता है. We need more marks and we also need more confidence. So these are our inputs and these are our outputs. So remember one thing. हम कहते हैं कि अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाओ यू शुड बी प्रोडक्टिव प्रोडक्टिविटी कहाँ है अरे मेरा दिन बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं था सो व्हाट इज प्रोडक्टिविटी इट इज सिंपली योर आउटपुट डिवाइडेड बाय योर इनपुट राइट एंड आवर गोल इज टू इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली तो इससे लेकिन थिंक ऑफ इट लाइक दिस अगर हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो हमें अपना आउटपुट इंक्रीज करना है एंड similarly, like for more efficiency, हमें अपना input minimum रखना है for maximum output. That is what you would call high productivity. So minimize your input and maximize your output. And this can happen only when you work on your weak topics. So think of it like this. Like you have this beam, है ना? हमने torque, rotational motion तो पढ़ा होता है. Like it's a very difficult chapter. I know everybody hates it. But it works. Analogy देखो एक बार. So we have to lift this giant heavy rock, है ना? And we have this beam. Now I could apply a force here, or I could apply a force here. अगर मैं यहाँ पे अपना force apply करूँ to produce the same torque, मुझे कम force लगानी है, right? So this is like putting your input on a weak topic. For lesser force, you can do the same work.
एंड यहाँ पे अगर हम अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को बार बार सॉल्व करते रहे, उन्हीं पे फोकस करते रहे, तो हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा टू गेट द सेम आउट, राइट? एंड रिमेंबर अ फ्यू थिंग्स. NEET requires knowledge of all chapters. मैंने जितना भी like trends देखे हैं, I have understood a few things कि NEET में they can literally ask you any question from anywhere. And thinking कि ये topic हम छोड़ सकते हैं, इस topic से question नहीं आएंगे, all of that does not make sense because वो randomly कहीं से भी question दे देते हैं. And if you focus only on your strengths, इसका मतलब ये है that you're losing a significant chunk of your marks, right? Because you will end up skipping those questions जो तुम्हारी weak topic से आए. And this last line is very, very important. It is worse to be a master of a few topics with zero knowledge of average at all of them. अगर हम कुछ topics के masters हैं, उनमें से कितने questions आ जाएंगे? 10 questions, 20 questions, right? You multiply it by 4 and the score is not very high. But if you're average at all of them, at least you'll get at least 360. I mean, of course you'll get more, but think of it like a comparison, right? 40 versus 360. Of course, 360 is better in this scenario, right? So it helps to be average at all of them and strong at a few, as opposed to being strong at a few and not knowing anything else. So, मुझे बहुत सारे अपने वीक टॉपिक्स लगते थे. अगर मैं एग्जांपल बताने बैठूं, I thought rotation was very hard. I thought thermodynamics was very hard. And मैंने काफी सोच के, I came up with this algorithm कि मैं अपने वीक टॉपिक्स कैसे फिक्स कर सकती हूँ. So I'll share it with you. So step number 1, you have to find your weak topic. अगर हमें यही नहीं पता कि हमारा weak topic क्या है, how will we fix it? So how do you find your weak topic? The easiest solution is कि टेस्ट अटेम्प्ट करो और MCQ सॉल्व करो. बिकॉज टेस्ट जब अटेम्प्ट करोगे एंड यू विल एनालाइज कि मेरी कहाँ कहाँ गलती हुई थी, रैंडम आइडिया तो लग ही जाता है कि मेरा ये टॉपिक वीक है, ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, राइट? ऑल्सो जब MCQ सॉल्व करोगे, यू विल गेट अ रफ आइडिया कि ये मेरा टॉपिक वीक है या फिर मेरा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है. एंड समटाइम्स ऑनेस्टली जस्ट हैव अ गट फीलिंग कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल इस टॉपिक में, तो आई नीड टू वर्क ऑन इट. देन स्टेप नंबर 2, you have to fix the weak topic. Now, to fix the weak topic, you can refer to books, you can watch lectures. Solving MCQs is the most important because theory बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है unless we learn how to implement the theory that we have read. So you have to solve as many MCQs as you can once you have, revised your theory. Then this one is also very helpful. Putting together notes and formula sheets, because end में जब tests के पहले revise करना होता है, it is not possible कि हम बैठ के अपना सारा reading material फिर से revise करें. So if we have notes, if we have formula sheets, especially for physics and physical chemistry, it is extremely helpful. Like I remember मैंने अपने सारे notes NEET के exam के दिन फिर से पढ़े थे. And it saved a lot of marks, at least 20-30 marks, right? So once you feel that you have fixed your weak topic, you can go and test yourself again. So वापस उस chapter पे जाओ and see if now you have started getting questions right. कि अब mistakes कम हुई है या फिर अभी mistakes same है, right? अगर उसके बाद भी questions गलत हो रहे हैं, that means you have to go back and fix. Right? So here is a loop, you have to go back and you have to fix it. And if you get questions right, congratulations. You have to go and repeat this for other topics. So this is my algorithm. And to sum up, I will say do not ever run away from a topic that you think is weak or something that you think is tough. If you have the time, devote all your energy and try to fix it, because हमें नहीं पता question कहाँ से आ सकता है. And अगर किसी weak topic से question आ गया, फिर बाद में हमें ये regret नहीं होना चाहिए कि हमने try ही नहीं किया and हमारे marks ऐसे ही खराब हो गए, right? So for everyone
who is on the webinar with me. Do you have any questions? It is always good to ask when you have the opportunity to. Anybody at all? हेलो Hi, Sejal. हेलो मैम, मुझे ना ये पूछना था कि मतलब आपने जो बताया पहले वो टॉपिक को फिक्स करने का, तो फिर मैं वो टॉपिक के बारे में पढ़ती हूँ एंड देन उसके बुक मार्क एमसीक्यूज करती हूँ एंड देन जब मेरे पास टाइम रहता है तो मैं नीट प्रेप पे डीपीपी बना के वो सॉल्व करती हूँ। तो समझो एटलीस्ट मेरा 30 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें से अगर 25 राइट गए तो मैं क्या समझू, उसको वापस में करूँ या फिर आई शुड लीव इट? I think 25 out of 30 is very good, but try solving at least 50 questions उस week topic के. नहीं ऐसा नहीं, मतलब मैं क्या करती हूँ ना, जैसे वीक टॉपिक फिक्स करने के लिए सपोज टू बी मेरा टॉर्क रोटेशनल मोशन में टॉर्क वीक है, तो मैं टॉर्क का पहला वो लेक्चर नोट्स पढ़ूंगी एंड देन फिर जब मैंने पहले टाइम मतलब नीट प्रेप पे जो मैंने रिकमेंडेड एमसीक्यूज किए उसके बुक मार्क एमसीक्यूज करूंगी जो मुझे वीक लगे थे एंड देन फिर उसके बाद मैं डीपीपी टेस्ट जनरेट करूंगी और मैं टेस्ट दूंगी। उसमें अगर मेरा 25 राइट है 25 out of 30 is a good baseline score. तो फिर उसको मैं मतलब उस टॉपिक को वहीं छोड़ दूं या फिर वापस पढूं? नहीं, उस टाइम के लिए छोड़ दो, लेकिन वापस आके जरूर रिवाइज करना जब बाकी टॉपिक्स कवर हो जाए. ओके। और हाँ, जैसा आप बोल रहे थे ना फॉर्मूला शीट ये सब, तो जैसा ये आर्यन भैया का दिया हुआ है उसी में हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करके मतलब जो अपना है, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं इतना बनाने का, तो उसी में हम लोग लेक्चर नोट्स लिखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया चलेगा जो ना वो? भी रिसोर्सेज हैं उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो, एनोटेट कर लो, उस पे लिख लो एंड उसी को रिवाइज करते रहो. बिकॉज आई अंडरस्टैंड अभी एग्जाम के इतने पास टाइम नहीं होता अपने सारे रिसोर्सेज फिर से बनाने का. जो 11th-12th में है उनके लिए आई विल एडवाइस कि दे शुड गो अहेड एंड मेक देयर ओन रिसोर्सेज इफ पॉसिबल. लेकिन जिनके पास अभी टाइम नहीं है, जिनका एग्जाम इसी साल है, आई वुड सजेस्ट कि जो भी रिसोर्सेज अभी मिल रहे हैं उनको पर्सनलाइज करके उनको बार बार रिवाइज करके अपना काम चला दो. ओके। और मतलब बायो के क्या करने का, जैसे ना मैं बायो के ना कुछ चैप्टर्स अगर मैंने रैंडमली टेस्ट दे दिए तो कुछ चैप्टर के टॉपिक्स वीक रहते हैं, उस टाइम पे फिक्स कर लेते हैं ना, तो उस टाइम पे ठीक है, बट ना थोड़े दिन बाद वापस देखेंगे तो वो भूल जाते हैं ऐसा। अच्छा, तो जब हमें ऐसे बहुत फैक्चुअल चीजें रिवाइज करनी होती है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पेस्ड रेपिटेशन, कि उसको तुम एक दिन करो, फिर उसको एक हफ्ते बाद करो, और फिर उसको आई थिंक अराउंड 1 मंथ बाद करो. सो उसको बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा. बिकॉज आई रिमेम्बर जैसे मेरी सेम प्रॉब्लम थी इनऑर्गेनिक में, एंड मैंने अपने नोट्स कम से कम 10-15 बार पढ़े थे. मुझे उसके बाद भी आई नेवर फेल्ट कॉन्फिडेंट कि मेरे सारे क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसको बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा. वन मोर थिंग आई यूज्ड टू डू वाज मैं लिख लेती थी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बार बार भूल रही हूँ, उनको आई वुड राइट देम डाउन एंड रिवाइज देम किसी टेस्ट के पहले. तो जैसे कॉकरोच था, आई हेटेड, मुझे बहुत गंदा लगता था वो टॉपिक, बिकॉज इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी एंड कुछ याद नहीं होती थी. तो मैंने एक्चुअली एक डायरी में उसके नोट्स बना लिए थे एंड मैं सिर्फ वही पढ़ती थी. उसके बाद मैंने एनसीईआरटी नहीं देखी उसकी. वो ना मैं मतलब नोट्स तो बना रही हूँ, जैसे आपने बोला ना ऐसे कुछ कुछ चैप्टर्स में भी मैंने कुछ कुछ किए हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे, लेकिन उसको वापस पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है मेरे को. उसका टाइम निकालो, वापस पढ़ने का टाइम निकालो, बिकॉज उसको जब बार बार हम रिवाइज करेंगे तभी वो हमें याद होगा. ओके. इट डज नॉट टेक वेरी लॉन्ग. जैसे एक चैप्टर उठा लो एंड उसको लाइक 5-10 मिनट्स में जो भी तुमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सिर्फ जो पॉइंट्स लिखे, पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जितने मिनट्स लग रहे हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो रिवाइज कर ही लो, लाइक एटलीस्ट बिफोर अ टेस्ट. एंड लाइक जितनी बार करोगे ना वो बेटर याद रहता है, दैट आई अश्योर यू. ओके. So there is one doubt by Saurabh. How to revise full syllabus before a full syllabus test? Okay, that's a good one, because that is something that I also struggled with.
तो मैंने बताया था ना, मैंने अपने रैपिड रिविजन मटेरियल्स क्रिएट किए थे। तो आई डिवाइडेड इट इनटू 2 कैटेगरीज, एक मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और एक मेरे वीक टॉपिक्स। जो मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे, टू बी ऑनेस्ट, मैंने उनको फिर से बार बार रिवाइज नहीं किया, बिकॉज आई फेल्ट कि I'd rather focus my energy on the topics that I'm not so confident with. तो जैसे I'll divide into 3 after that. So my weak topics, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स के लिए आई हैड माई फॉर्मूला शीट्स। मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अपनी फॉर्मूला शीट्स बनाई हुई थी, मैं उन्हीं को रिवाइज करती थी। एंड कुछ टॉपिक्स थे जैसे सेमीकंडक्टर्स एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड ईएम वेव्स, जो मतलब थोड़े बायो टाइप है, बिकॉज उनमें बहुत सारे फैक्ट्स याद करने होते हैं। नोट्स बनाए थे एंड आई वुड रिवाइज दोज। तो फिजिक्स कवर हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी आई हैड मेड शॉर्ट नोट, नॉट शॉर्ट नोट्स, आई हैड मेड फॉर्मूला शीट्स। तो आई रिवाइज्ड दोस फॉर्मूला शीट्स बिफोर द टेस्ट। एंड इनऑर्गेनिक के लिए मैंने नोट्स बनाए थे, एंड वो आई वुड सिलेक्टिवली चूज कि इस टेस्ट के लिए मैं पी ब्लॉक कर लेती हूँ, इसके लिए मैं डी कर लूंगी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई फेल्ट कि मेरे पास जितना टाइम था मेरे पास उसके हिसाब से। ऑर्गेनिक के लिए I would suggest कि you refer to your notes. So like NCERT में organic is fine. It is nice to read from once, but ultimately I used to revise my notes organic के लिए भी, and that also only those topics जिसमें I felt या फिर मैं कुछ भूल रही हूँ, only those. So right before an exam, focus only on revising your weak topics. जो strength है उसको एक दिन पहले छोड़ दो, ठीक है? Just have faith कि I'll be able to manage। अपने वीक टॉपिक्स पे फोकस करना। एंड देन बायो के लिए अगेन आई वुड रीड द नोट्स, जैसे कॉकरोच वाले नोट्स थे, एंड आई थिंक इकोलॉजी के मैंने शायद नोट्स बनाए थे, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा फैक्ट्स लगते थे, तो आई वुड रिवाइज दोज। एंड कोई भी एक रैंडमली आई वुड पिक अ यूनिट कि चलो इस फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी रिवाइज करते हैं, देन द नेक्स्ट टाइम आई वुड रिवाइज प्लांट फिजियोलॉजी। तो इस तरह ओवर 4-5 टेस्ट मेरा पूरा फुल सिलेबस रिवाइज हो जाता था। लाइक बिफोर एवरी टेस्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू रिवाइज एवरीथिंग, तो थोड़ा सा हमें सिलेक्टिव होना पड़ेगा इन व्हाट वी चूज टू रिवाइज एग्जाम के बिल्कुल एक दिन पहले। So there is a doubt by Shruti. I find it difficult to revise huge chunks of syllabus with equal efficiency. Could you please suggest a way around? Huge chunks of syllabus, I can understand. बहुत ज़्यादा overwhelming हो जाता है। I would just divide it into 3 कि मतलब एक दिन में सारा नहीं करना, but मुझे divide, जैसे one day I will complete 1 unit of biology, the next day I will complete 1 unit of physics. तो ऐसे करके I would revise. So that is how I did general revision. And one more thing that I did the rest of the day is मैं टेस्ट देकर एनालाइज करती थी कि मुझे क्या क्या शॉर्ट में पढ़ना है, व्हाट आई वुड लाइक टू कॉल टारगेटेड रिविजन, कि टेस्ट दो, देखो कि कौन सा टॉपिक गलत हुआ एंड उसको रिवाइज करो। तो उससे हमारी स्पेसिफिक रिविजन होगी, एंड बैकग्राउंड में वी कैन कीप चूजिंग, यू नो, लाइक 1 यूनिट आज कर लूंगी, नेक्स्ट यूनिट में कल कर लूंगी। तो ऐसे करके ना हमारा ओवर टाइम सारा रिवाइज जाएगा। And to maintain your efficiency, I would suggest कि you just take breaks बीच में. Like you complete a chapter, you take a 15-20 minute break, then you complete another chapter. पूरा एक बार में करोगे, it will get very tiring. ठीक है? So I hope that solves your question. Then next question by Vinay. What should be the frequency of giving full syllabus mock test? Okay. So it depends if you're in 11th, in 12th, or if you're a dropper. At this point, if you're in 11th, I would say 1 full syllabus test a month is fine. Anyway, you can give 1 full syllabus, 11th ka full syllabus test in 2 weeks. At this stage, if you're in 12th or if you're a dropper, you should give once full syllabus test minimum in 1 week. I would advise you solve at least 2 to 3 a week, like 1 test every 3 days, roughly. ठीक है? And it should be preferably full syllabus. लेकिन half, like 11th syllabus या 12th syllabus भी चलता है, but preferably full syllabus.
Then how to manage MCQ practice and revision with full syllabus test in the last month. I will say कि last month में leave everything and just do targeted revision. कि जो हमने टेस्ट दिया उस दिन एंड जो हमारे टॉपिक्स गलत हुए हम बस वही रिवाइज करेंगे, उसकी हम थ्योरी पढ़ लेंगे एंड जो हमने पहले एमसीक्यू सॉल्व किए वी कैन गो थ्रू देम, हमने कोई मिस्टेक्स किए थे, कुछ सर्कल किया था क्वेश्चन को तो वो देख लेंगे एंड फिर ज्यादा से ज्यादा अगर हमें लग रहा है कि टॉपिक बिल्कुल लाइक वी नीड टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस तो आई विल से सॉल्व लाइक 20-30 क्वेश्चंस ओनली, ठीक है, डिवोट मोर टाइम टू टारगेटेड रिविजन। ऐसे जनरली लेके मत बैठ जाना कि ये यूनिट मैं अब फिर से पूरा करूंगी फ्रॉम ए टू जी, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा एंड व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज दैट यू प्रैक्टिस टेस्ट्स, ठीक है। सो फोकस मोर ऑन द फुल सिलेबस टेस्ट एंड लेस ऑन द एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड अगर किसी टॉपिक का करना है डू 20-30 क्वेश्चंस to sum up your answer. So there is a doubt by Ridhi. Terrible backlog in class 11 and now I'm in 12th. So I should focus on 12th or 11th. Okay. So I'll tell you my experience. थोड़ा सा लंबा आंसर होगा but सुन लेना. तो 11th में मैंने कोई टेस्ट नहीं दिए थे, मैंने बिल्कुल ढंग से पढ़ाई नहीं की थी. Genuinely, I had a huge backlog. But 12th में I decided कि I am going to revise 11th side by side. तो my opinion would be कि अगर तुम दिन में 2 घंटे या 1 घंटा निकाल सकते हो 11th की पढ़ाई करने, that will be very good. फिर एंड में आके ना स्ट्रेस नहीं होगा कि मैंने 11th बिल्कुल भी नहीं किया. And that is what helped me because मेरे 11th के revision tests भी होते थे 12th में and I would regularly study 11th. So focus on 12th primarily. Because board exams are 12th based, school के सारे exams 12th based, everything is 12th based. But take out some time for 11th on a daily basis ताकि बिल्कुल end के months में ना overload ना हो जाए कि हमें 11th भी पूरा फिर से करना है, ठीक है? So don't give up, just try to take out time for 11th का syllabus. If you want to take my advice, some people will also say कि end में जाके कर लेना. I would say कि try to do it the entire year ताकि end में stress ना हो. So there is a doubt by Pranjali. मेरे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस बहुत रॉन्ग हो रहे हैं, रिएक्शंस भी बार बार भूल जाते हैं, so could you suggest कैसे याद करूं? So you can make क्या कहते हैं little flow charts रिएक्शंस के, like short notes की. रिएक्शन में reagent क्या है, substrate क्या है, product कैसा बनेगा, write it down and keep revising it again and again. So that is number 1 कि हम reaction कैसे याद करें. And questions बहुत wrong हो जाते हैं, so that means your theory is not clear, right? So first clarify your theory, lectures देखो, अपने notes बनाओ, step by step, go step by step, don't panic, make your short notes concise करो, reactions की table बना लो कि ना ये reaction का नाम है, ये इसके reagents हैं, substrate ये है, product ये बनेगा, right? So you can do that. And then you start solving MCQs. So I would suggest कि हर chapter के जैसे alcohol, phenol, ether है, then haloalkanes, haloarenes है, सबके कम से कम 75 to 100 MCQs करना ही करना, if you have the time. You didn't mention कि कौन सी class में if you're appearing to NEET this year or not, but if you have the time, try to solve at least 75 to 100 questions ताकि बिल्कुल clear हो जाए. And then keep going back and keep revising. मैंने बोला ना spaced repetition is very important. So day 1, day 7, and then 1 month. So you can try doing that and see if it helps. So Siddharth is asking me, ma'am, for inorganic, should we revise class notes or NCRT completely? As in notes, there are some points out of NCRT. Okay. So I revised both. मैंने NCRT notes and class notes को compile करके बहुत comprehensive notes बनाए थे, जो मैंने पूरे अच्छे से revise किए. बट मेरे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं आया, राइट? तो आई विल सजेस्ट कि अपने एनसीईआरटी के नोट्स पे फोकस करो, रीड देम ओवर एंड ओवर एज मेनी टाइम्स एज यू कैन. बट अगर तुम्हें मॉक टेस्ट में ऐसा लग रहा है कि कोई एक बाहर का क्वेश्चन है जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, तो कोई कॉन्सेप्ट है जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, उसको एक्स्ट्रा पढ़ लेना. बट आई विल से 99% योर फोकस शुड बी ओनली ऑन द एनसीईआरटी, स्पेशली अगर
एग्जाम अभी मई में आने वाला है, तो आई विल से जस्ट रीड द एनसीईआरटी. So there is a doubt by Yash. Full syllabus test में score 550, 570 पे stuck हो गया है. कुछ special tips. Okay. So if I had the chance कि मैं personally बात कर पाऊँ, I would have asked कि exactly कहाँ गलत हो रहा है. But generally 550, 570 पे it's like a mixture कि थोड़ा बहुत theory भी incomplete है and हमारे MCQ practice भी नहीं है, फिर silly mistakes बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. तो आई विल सजेस्ट कि व्हेन यू सॉल्व अ टेस्ट, सी की कौन से टॉपिक्स ज्यादा गलत हो रहे हैं, पहले उनको आइडेंटिफाई करो एंड फिक्स दोज. ठीक है, लाइक द एल्गोरिथम दैट आई टोल्ड यू, फाइंड योर वीक टॉपिक्स, फिक्स देम, देन टेस्ट योरसेल्फ अगेन, मेक योर फॉर्मूला शीट्स, मेक योर रिविजन नोट्स, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि उससे मार्क्स थोड़े तो इंक्रीज होने स्टार्ट होंगे. देन एज यू गो somewhere like when you start reaching 620 630s and वहां पे जाके जब स्कोर अटक जाता है, यूजुअली आई हैव सीन इट इज बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक्स, कि हमने एक क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, हमने कैलकुलेशन गलत कर दी, एंड एट दैट टाइम यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर क्या कहेंगे, टेस्ट सॉल्विंग एबिलिटी, कि मतलब हम टेस्ट कैसे दे रहे हैं. सो एट योर स्कोर आई थिंक यू शुड रिवाइज थ्योरी एंड यू शुड फोकस ऑन सॉल्विंग द एमसीक्यूज जो तुमने अपने वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई किया. So there is one more doubt. When I give tests, I come across many weak topics, and to fix them, it takes a lot of time. This builds a lot of anxiety as only 50 days are remaining and I'm unable to focus. Okay. I'll give you one target. By the end of this month, if you're working on your weak topics, you should not panic at all. Because I'll tell you something. लास्ट डे तक वीक टॉपिक्स आ रहे थे कि अरे ये तो मुझे याद नहीं है, अरे ये तो मैंने नहीं पढ़ा, ओ माय गॉड अब मैं क्या करूँ, इसमें अगर क्वेश्चन आ गया मेरे मार्क्स चले जाएंगे. सो ट्रस्ट मी, इट विल हैपन बिल्कुल एंड तक, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, वी आर ह्यूमंस and it's not possible to study each and everything over and over and remembering everything. It is not possible. तो हम क्या कर सकते हैं, मोटी मोटी ग्रोस मिस्टेक्स हैं, हम उनको फिक्स करें, right? So at this stage, at least till the end of this month, I will suggest work on your weak topics without any stress. ठीक है, अभी टाइम है, you have a good 2-3 weeks to work on your weaknesses, and इस stage पे don't take stress and बिल्कुल anxious मत हो यार, it will be fine. Just work on your weak topics with a steady mind and make sure कि you do not leave any topic जिसको बिल्कुल हमने टच भी नहीं किया है, राइट? ऑल्सो अगर हम एंग्जाइटी से पढ़ते हैं तो आई फील कि रिटेंशन भी हमारी कम होती है एंड हमारा फोकस भी कम होता है, राइट? सो इफ यू आर स्टडी विथ फुल फोकस एंड डोंट बी एंग्शियस. Vinay, do you want to ask something? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ प्लीज पूछो. हेलो मैम, 6 मार्च को एक टेस्ट दिया था फुल स्लीव्स और एक 10 मार्च को, तो मेरा स्कोर 49 था और 5 कि मैंने बिना रिवाइज करके दिया था. अच्छा, तो उसमें मैंने देखा कि मैं मतलब फॉर्मूला रिकॉल नहीं कर रहा था. तो मेरा ये क्वेश्चन है कि I think I lost Vinay. I'll move on to the next question tab tak. So Shruti says that sometimes she faces some FOMO because in her notes there are a few high level questions which are rarely asked and I end up spending more energy on them. Please suggest. This is an easy answer. Ignore. Bas restrict yourself to the content in the NCERT because trust me, मुश्किल से यार 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर आएंगे, 2-3 क्वेश्चन. मेरे 2020 वाले पेपर में एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आया था
and just running after those 2 questions and leaving all the others makes no sense, है ना? वो 2 क्वेश्चन छोड़ के I'd rather कि तुम बाकी रिमाइंडर क्वेश्चंस में you get 2 correct, 2 more correct, right? So just don't spend your energy. You have to focus your energy for maximum output, right? So that मैंने वेबिनार में जो बोला था इनपुट आउटपुट रेशो, अगर हाई लेवल क्वेश्चंस के पीछे अभी भागेंगे तो हमारा आउटपुट बहुत कम होगा. Like huge input, you know, you're wasting so much of your time and spending so much of your energy for a very छोटा सा output. So I will say कि just restrict yourself to NCERT stuff. So there is a doubt by Subhasmita. Please tell me how to score 300 plus in bio and IOC and OC करके 100 plus chem में आ जाएंगे क्या? So scoring 300 in bio, I think just the NCERT is more than enough. अपनी NCERT ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो बायो के एंड अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ. बायो का टू बी ऑनेस्ट और कोई तरीका है नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली वो हमें फैक्ट सारे याद होने चाहिए. तो बायो के लिए तो 300 प्लस तो एनसीईआरटी के थ्रू गारंटीड है. एंड आईओसी एंड ओसी करके 100 प्लस केम में आ जाएंगे क्या? सी ऐसा हो कि हमने आईओसी एंड ओसी किया एंड हमें सब कुछ आता है, एक भी क्वेश्चन उसमें से गलत नहीं हुआ, देन श्योर आ सकते. बट आई विल से कि डोंट इग्नोर फिजिकल केमिस्ट्री, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री इज वेरी स्कोरिंग. मतलब अगर हमें फॉर्मूला पता है एंड हमें ये पता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सो इट्स इजी मार्क्स. जबकि इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में तो काफी याद करना पड़ता है कि दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रिएक्शन, दिस इज हाउ. तो उसमें ज्यादा एफर्ट है. सो डोंट इग्नोर फिजिकल, बट 300 प्लस तो आ ही जाएंगे फॉर श्योर बायो में एनसीईआरटी पढ़ के. एंड केमिस्ट्री में प्लीज डोंट इग्नोर फिजिकल. इट्स हार्ड टू से कि सिर्फ इनऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक से कितने मार्क्स आएंगे. Then Astha is asking, is it okay if I focus on mainly MCQ practice, PYQs for all 3 subjects and give tests after every 3 to 4 days after completing certain chapters for this month, and then go for full syllabus tests next month? हाँ, MCQ practice. I will suggest कि PYQs से थोड़ा सा different करना, because पहले PYQs used to be very different. जब जिस टाइम मैंने सॉल्व किए थे PYQs used to be a lot more difficult and मेरे पेपर में तो बहुत easy questions आए थे comparatively. तो MCQ practice करो for all 3 subjects. That is a great idea. And tests after 3 to 4 days right now after completing certain chapters is also fine. But at the end of this month, this entire practice should be complete. And full syllabus test next month onwards is good. At least एक करना every 2 to 3 days minimum for next month. So Vinay is asking, should I revise all chapters, then give more full syllabus tests, or start weak topics and give tests parallelly? Start weak topics and give tests parallelly. ठीक है? Because if you solve tests parallel में, you will keep identifying कि इसके बाद मुझे ये पढ़ना है, इसके बाद मुझे ये पढ़ना है. Should I revise all chapters and then give more full syllabus tests? I'll tell you क्या होता है. हम revise करने बैठ जाते हैं, हम theory में ही फंस जाते हैं. हम बार बार थ्योरी पढ़ते रहेंगे एंड वी विल इग्नोर टेस्ट प्रैक्टिस, एंड हमें लगेगा अच्छा हमने तो पूरा रिवाइज कर लिया. वील हैव अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी. तो हमें फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि हमने एक बार रिवाइज कर लिया तो एवरीथिंग इज फाइन. सो रीड योर वीक टॉपिक्स एंड गिव अ टेस्ट पैरेलली. ठीक है? 2-3 दिन में एक टेस्ट देना टेक्स 3 hours, देन यू एनालाइज इट एंड देन यू स्टडी योर वीक टॉपिक्स. सो द सेकंड ऑप्शन. All right. Any more questions? Astha, what do you want me to repeat? Vinay ko I was telling he should give tests parallel to weak topics. मतलब दोनों simultaneously करने हैं ताकि हमें अपने weak topics पता चलते रहे and test के through, and we keep revising them. फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि हमने सारे पहले रिवाइज कर लिए, अब हम सिर्फ टेस्ट देंगे.
बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि थ्योरी पढ़ने में ना वी डोंट अंडरस्टैंड कि एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, तो वो सिर्फ टेस्ट देके हमें हैबिट डेवलप होती है. Oh, sorry, your question. Right. So you asked if it is okay to focus on mainly MCQ practice. So I agreed you should go ahead with it. And but be very sure कि इस month के end तक हमें अपना ये completing certain chapters वाला story finish करनी है. And next month onwards, only full syllabus tests with targeted revision and tests every 2 to 3 days. So your plan is okay. Any other questions? Feel free to unmute and ask. I'm right here to solve your question. All right. So if we have no more questions, this brings me to the end of my presentation. Work on your weaknesses to see your marks grow, right? We always want this trajectory. Beach mein there will be downs. We do not have to get demotivated and we have to keep working on our weaknesses, right? Always remember the input-output ratio. All right. Thank you so much. I will stop sharing my screen. Thank you for the webinar, ma'am. Thank you. Of course, it was my pleasure. Thank you, ma'am. So, Kapil sir, we'll end the webinar. Yes, you can please end the webinar. Yeah. All right.